Bismillahirrahmanirrahim. We were talking about moles in the last few classes, and in today's class, we are going to talk about this again. And today, we are moving towards a new thing, which is empirical formula. And this is something very important in terms of past papers, in terms of questions, or you can say that कि भाई आपके एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है? So let's start with empirical formula. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट होता क्या है ये, ठीक है ना। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, देन वी कैन कैलकुलेट इट। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है तो फिर कैलकुलेट करने का क्या फायदा, सही है ना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है और इसको हम कितने तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके क्या स्टेप्स होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेस क्लास, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक, अगर आप लोगों को पता हो, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सब्सटेंस है, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6। Absolutely right बच्चों। So this is what the formula for glucose. We all know this. Most of you मेरे ख्याल से उनको पता होगा, ठीक है ना। So what is this? ये किस टाइप का फॉर्मूला है बच्चों? This is known as molecular formula। बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। Why we are calling them molecular formula? हम इसको molecular formula क्यों बोलते हैं? molecular formula कौन सा वाला फॉर्मूला होता है बच्चों? molecular formula वो वाला फॉर्मूला होता है which is telling you the exact number of each element, कि उसके कितने एटम्स मौजूद हैं, ठीक है ना। So you can see this right now, this formula is telling you कि भाई कार्बन 6 है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। So this is actually known as molecular formula, which is telling you the exact number of atoms of each element. Right, so we can write the definition of this as well. Exact number of atoms of each element. ऐसा formula बच्चों which is telling you the exact number of atoms of each element will be termed as molecular formula, ठीक है ना। empirical formula क्या होता है? empirical formula is actually the simplest ratio of molecular formula बच्चों। This is actually considered as the simplest ratio. This is telling you the simplest ratio between or among the elements, right? आपके जो elements हैं उनके दरमियान, उनके atoms के दरमियान जो simplest ratio है, that is telling you the empirical formula, right? So you can see this right now. We have this formula C6H12O6 and this compound, और ये जो एलिमेंट है इसके अंदर उसके जो एटम्स हैं, दे ऑल कैन बी डिवाइडेड बाय द हाईएस्ट नंबर व्हिच इज 6। सबसे ज्यादा जो सबसे बड़े नंबर से ये डिवाइड हो सकते हैं वो है 6। सो इन दिस वे यू आर हैविंग व्हाट, एम्पिरिकल फॉर्मूला व्हिच इज 1:2:1। यू कैन सी दिस। इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है बच्चों? इनका सिंपलेस्ट रेशियो है 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। So you can see this बच्चों, this is telling you the simplest ratio among the elements. That is why this is known as empirical formula, right everyone? जी। So इस तरह से आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो एम्पेरिकल फॉर्मूला। फॉर सपोज मैं अगर आपको दूं एक और एग्जांपल, फॉर सपोज वी हैव इथेनोइक एसिड C2H4O2। This is what बच्चों? This is ethanoic acid. So can you please tell me what is the empirical formula of this बच्चों? CH2O। Yes, absolutely right. This is एग्जिस्ट नहीं करता एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब वो एक्चुअली एग्जिस्ट तो नहीं करता ना? नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट तो मॉलिक्यूलर फार्मूला करता है, ठीक है ना। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू निकाल रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला, राइट। वो हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये उसका यूज क्या है, अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है ना। सो यू कैन सी दिस, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ दिस, the simplest ratio you can find it out over here is 2:4:1:2. You can divide all of them by 2, so it will give you 1:2:1. So the empirical formula would be CH2O. This is considered as empirical formula of ethanoic acid, right every one of you? Hopefully it's clear for you, right everyone? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. So for suppose if you talk about this molecule,
और इफ यू टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, तो जरा जल्दी से मुझे बताओ बच्चों इनके एम्पेरिकल फॉर्मूलाए क्विकली। यस, पहले वाले का मुझे बताएंगी घना। जी घना। सर आपने C6 लिखा है ना? C6H6। CH हो जाएगा। CH हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। दूसरे वाले का मुझे बताएंगी आलियाना। जी आलियाना। फिर दूसरा क्या लिखे? C4H10। यस आलियाना। It is C2, no, C2 and C2 and 5, I think. yes, absolutely right. 2 2s are 4, 2 5s are 10. Very good बेटे, good job. Yes, इसके बाद मुझे बताएंगे अब्दुल्ला सैयद। यस अब्दुल्ला, लास्ट वाले का बताओ जल्दी से बेटे। सर CH2। CH2, absolutely right. So बच्चों अगर आपको मैं फॉर्मूला दे दूं तो मेरे ख्याल से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास फॉर्मूला मौजूद हो तो फॉर्मूले को देख के एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, ये डेफिनेटली बुक में मौजूद होगा जुहेब। चलें बच्चों, ये तो एक पैटर्न था कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले को देखकर फाइंड आउट कर सकते हो कि किस तरह से आपने क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग डिफरेंट। अब हम जा रहे हैं किस तरफ? अब हम जा रहे हैं कि अगर हमें परसेंटेजेस गिवन हो तो परसेंटेजेस से हाउ कैन वी फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो चले देखते हैं। नाउ कैलकुलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन थ्रू परसेंटेजेस, ठीक है ना। अब हम किसके थ्रू? परसेंटेज बाय मास के थ्रू कैलकुलेट करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेट्स सी बच्चों, आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर फॉर सपोज कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन oxide of copper, of an oxide of copper containing 80% copper. Now just look at over here बच्चों, the question is saying that you need to calculate the empirical formula, right? And ये empirical formula है किस चीज का? ये empirical formula है an oxide of copper. And also you know this कि इसके अंदर 80% तो कॉपर ही है। ठीक है, so first of all you need to keep remember oxide of copper. It means this is a compound of copper and oxygen, right बच्चों? ऑक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन होता है क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड है तो कॉपर और ऑक्सीजन होगा, राइट और नॉट? राइट बच्चों? Yes, Okay, so you can write it over here that we have total 2 elements over here. One is copper and one is oxygen, because this is oxide of copper. So oxide means we have oxygen, and copper ki oxide hai, it means we have copper and oxygen. So we have only 2 elements over here. And if you talk about overall compound, so it must be 100%. So if you have 80% copper, so it must be having 20% oxygen in it, right bacho or not? yes, जी sir. सर। Okay, so now this is the simple thing. This is a basic start. So let's calculate the rest of the thing बच्चों। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना है 2 स्टेप्स, ठीक है ना। टोटल 2 स्टेप्स हैं, टोटल 2 स्टेप। पहले स्टेप में क्या करना है हमने? रिमेंबर बच्चों, the first step is always you need to divide it by atomic masses. The first step you always divide the percentages by atomic masses. So this is actually percentage by mass. So if you divide mass by atomic mass, so you are getting actually the number of moles. So आप इसके moles निकाल लोगे एक तरीके से mass over mr से. So in the first step we always divide by the atomic masses. So you can see this 80% is actually the percentage of copper. So I am dividing it by the percentage of copper, oh sorry, by the atomic mass of copper, which is 64. And then the 20% is actually the percentage of oxygen. So I am dividing it by the atomic mass of oxygen, which is 16, right or not? Copper का 64 Yes. होता है atomic mass, we all know that. Oxygen का होता है बच्चों 16, we all know that. और ये हमें periodic table से भी मिल जाता है. So in the first step, we are actually calculating what बच्चों? We are calculating number of moles, right?
तो हमने एटॉमिक मास से डिवाइड कराया, हमारे पास मोल्स आ गए। जल्दी से बताएं व्हाट आर द आंसर्स बच्चों। 1.25. 1.25 and also here should be 1.25, right? जी Yes, sir. Right now you can see this बच्चों, right now we have two similar answers, right? हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक जैसे आंसर्स आए, एक आंसर बड़ा भी हो सकता है, एक आंसर छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम डिवाइड कराते हैं, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट आंसर, ठीक है ना। जो छोटा आंसर होता है ना, सबसे छोटा आंसर जो होता है उससे हम सबको डिवाइड करा देते हैं। अभी तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो किसी को भी ले लो आप, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे जो सबसे छोटा होगा उसको आप सबसे डिवाइड कराओगे। सो यू कैन सी दिस, इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 1.25 which is actually the same value, और उसमें से कोई भी स्मॉलर नहीं है, सो मेरे पास दोनों का रिलेशन आ जाएगा 1:1. सो आई कैन से दैट द फॉर्मूला विल बी copper is 1 and oxygen is also 1. So I can say that the empirical formula is copper oxide, CuO. This is copper 2 oxide, right बच्चों? Yes, sir. Right, in this way you can find out what empirical formula. ठीक है बच्चों, इस तरह करना होता है हमें। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उसमें शॉर्टर वाला आ जाएगा, सेकंड स्टेप वाला क्लियर हो जाएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फॉर सपोज वी हैव अ कंपाउंड containing carbon, hydrogen, and oxygen only, right? For suppose I have a compound in which I have three elements: carbon, hydrogen, and oxygen, right? Carbon is 40% by mass, and hydrogen is 6.6%, 6% by mass, right? What we need to do, bacho, we need to calculate the empirical formula of the compound. Calculate the empirical formula of compound, right? So bacho, you can see this over here. First of all, you need to write down the elements जो कि आपके पास यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको वो लिखना पड़ेगा। So bacho, how many elements we have right now? 3. We have carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बच्चों अगर आप इस तरह से लिख लोगे तो आप मिस्टेक नहीं करोगे, अगर आप इस तरह नहीं लिखोगे तो आप मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि देखो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इन द क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको सिर्फ कार्बन की परसेंटेज दी है और हाइड्रोजन की दी है, ठीक है ना। तो आप बाय मिस्टेक ये कर सकते हो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को ही कैलकुलेट कर दो और ऑक्सीजन को भूल ही जाओ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए पहले आप नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे कितने हैं, फिर उसको लिखेंगे, और फिर लिखेंगे कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.6% है। जब आप इस तरह से लिख लोगे तो आपको ऑक्सीजन खाली नजर आएगा, तो आप बोलोगे यार ऑक्सीजन का भी कुछ करना होगा, तो आपके जहन में आ जाएगी ये बात। और अगर आप इस तरह नहीं करते तो हो सकता है आप ऑक्सीजन को भूल ही जाते। So we need to know that we have a complete compound in which we have three elements. So definitely a 100% compound having 40% carbon and 6.6% hydrogen. So the remaining will be oxygen. 53.34%. So it must be 53 point बच्चों 34%, right? 34%. Yes. And what is the first step बच्चों? पहले स्टेप में हमें क्या करना है? We need to divide by atomic masses. So carbon का atomic mass 12, hydrogen का 1 and oxygen का 16. Yes. Tell me the answers बच्चों. It must be 3 point something. 3.33 है और 3.33. हाइड्रोजन का 6.6 है, ऑक्सीजन का 3.3375 है। 3.337 somewhere. सही है। Now you can see this कि the smallest value, the smallest answer is 3.33 which is of carbon, right? तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कार्बन की है। अब हम क्या करेंगे, इन सब आंसर्स को स्मॉलर वाले से डिवाइड करा देंगे ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए। So what will be the simplest ratio बच्चों? आप देखोगे कि आपके पास आएगा 1, 2 and 1. It means the empirical formula would be CH2O, right बच्चों, or not? Yes, sir. Yes, sir. कोई परेशानी किसी को? Is that clear to every one of you? सर मुझे पूरा शुक्रिया। समझ आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि हमें मोल्स कैसे मिलेगा 40% ओवर 12 से। मोल कैसे आया? बेटा 40% बाय मास है ना ये,
यानी कि फॉर सपोज अगर आपके जी। पास जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम्स होता, फॉर सपोज अगर आपके पास जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम्स होता, तो इसमें से 40% जो है 40 ग्राम जो है कार्बन होता। जी। इट्स जस्ट assumption, राइट? अच्छा अच्छा सही सही। अगर ये ओके। ग्राम में भी गिवन होता तब भी आप इसी तरह निकालते हैं, तो ग्राम में भी गिवन होगा तब भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे, सही है? परसेंटेज में होगा तब भी ऐसे करेंगे, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं एक स्टेप ऊपर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है, तो हम एक स्टेप और ऊपर जा सकते हैं। आप 2 स्टेप समझ में आ गए हैं सबको बच्चों? Yes, sir. Now just look at over here, one more step. What I'm trying to do over here in the next step. So this is question number 3. Calculate the empirical formula of an oxide of iron containing 70% iron. Now you can see this बच्चों. This time I have one more thing to do over here, but एक step ज्यादा करना होगा यहाँ पर, और वो क्या step होगा जरा देखिए. For suppose right now we have 2 elements, iron and oxygen, because this is an oxide of iron, right? This is an oxide of iron, so it must be having iron and oxygen only. And we have 70% iron, so it must have 30% oxygen as well, right बच्चों, or not? Yes, sir. ठीक है. So we need to divide in the first step by atomic masses, and then we will get the answers of this, which are actually moles. बच्चों जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर मेरे ख्याल से आएगा, it must be 1.25. 0.25. and it must be 1.875, I think. Yeah, 1.875. Now this is the first step, हमने divide by AR कर दिया, ठीक है ना? Now the second step we need to divide by the smallest value. तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो मैं इन दोनों को स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कराऊंगा. तो व्हाट शुड बी द रिलेशन? यू कैन सी दिस, इट मस्ट बी 1.5 and 1, राइट? राइट बच्चों? Yeah. अब मुझे जरा एक बात बताओ, क्या मैं फॉर्मूले को इस तरह से लिखूं? कभी आप लोगों ने देखा है इस तरह से फॉर्मूला? No, sir. नहीं. नहीं देखा No, ना? sir. तो हम अगर इस तरह की कोई तो multiply by सिचुएशन 2. आ जाए, यस, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए कि आपके पास 1.5 आ रहा हो, 1.25 आ रहा हो, 1.33 आ रहा हो, 1.2 आ रहा हो, तो उसको हम राउंड फिगर नहीं करते, हम उसको ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं जिससे वो राउंड फिगर हो जाए, ठीक है ना? तो फॉर सपोज अगर मुझे इसको राउंड फिगर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना Multiply by पड़ेगा. 2. यस. और अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं ऑक्सीजन को, तो मैं सिर्फ ऑक्सीजन 3. को नहीं कर सकता, मुझे कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. सो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड 2 एज वेल. सो इन दिस वे द रिलेशन वुड बी 2:3 and the formula will be Fe2O3. What do you say बच्चों? Is that right or not? Yes, sir. This is the third step. अगर जरूरत हो तो फिर हम ये स्टेप करते हैं, ठीक है बच्चों? सही है. Yes, sir. चलो अब ये आपकी बारी है. अब एक क्वेश्चन आप करेंगे, मैं जरा देखूं कि आपको कितना समझ में आ गया. सो ओवर हियर यू कैन से दैट अ हाइड्रोकार्बन. बच्चों देन हाइड्रोकार्बन इसका मतलब क्या हुआ? Contains hydrogen, carbon. Yes, this is a Hydrogen. compound which is containing carbon and hydrogen only, right? So a hydrocarbon containing 90% carbon. चलिए, you need to find out the empirical formula of this. Calculate the empirical formula quickly बच्चों. ओके सो बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला आप लोगों को निकालना आ गया है. अब हम निकालेंगे क्या बच्चों? अब हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला. इफ यू नीड टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला, सो हाउ कैन यू डू दिस? लेट्स सी. सो द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला. Molecular formula. Now बच्चों you need to keep remember, first of all you need to find out the empirical formula, then you need to move towards molecular formula. This is the way to find out molecular formula actually. सबसे पहले empirical formula तो आपके पास होना ही होना चाहिए, तब आप molecular formula पे जा सकते हो. तो चलें पहले empirical formula निकाल लेते हैं. So here we have 40.5 grams sample of chloride of sulfur.
यानी कि क्लोरीन और सल्फर होगा खाली, सही है ना। एंड कंटेन 21.3 ग्राम्स क्लोरीन। और देखें ये मास में गिवन है, तो लेट्स सी वी हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स ओवर हियर, क्लोराइड of sulfur. It means we have two elements, chlorine and sulfur, right बच्चों? Yes, And sir. it is containing 21.3 grams chlorine. The overall compound is 40.5, and out of 40.5 we have 21.3 grams chlorine. तो अगर इसमें से हम 21.3 माइनस कर दें तो we will have what? The mass of sulfur as well. 19.2, right? So you can see this, these are actually the masses of sulfur and chlorine. This is the basic step. अगर आपको ये आता तो मेरे ख्याल से पूरा आंसर आपका सही हो सकता है। Now chlorine का atomic mass 35.5, sulfur का 32. Just tell me the answers of this. I think ये same होने चाहिए। बताइए क्या आ रहा है बच्चों? 0.6. 0.6 आ रहा है सल्फर Both. का। दोनों का ये आएगा, देख लें। Then we need to divide both of them by 0.6, then we will have the relation of 1:1, right? So the formula would be CLS, right बच्चों? सर SCL ही सही है? एक ही बात है, हाँ कोई मसला नहीं, हाँ ओके। right? अब now just look at over here बच्चों, अगर अब मैं पीछे आ जाऊं वापस अपनी जगह पर जो मैंने जहां से मैंने स्टार्ट किया था, just look at over here बच्चों, if we talk about empirical formula and the molecular formula, this is a molecular formula and this is empirical formula. Just look at over here बच्चों, empirical formula and the molecular formula. What is the difference between these two formulae? हमने molecular formula से empirical formula में जाने के लिए क्या किया है? हमने 6 से डिवाइड किया है बच्चों। किससे डिवाइड किया है? 6 से। 6. It means we have a difference of 6 between these two, right? जी Same as it is, अगर आप नीचे आते हैं, जो हमने नीचे किया है बच्चों उसमें भी हमने 3 अलग अलग एग्जांपल्स अगर की हैं, तो इफ यू जस्ट फाइंड दीज एग्जांपल्स इन योर नोट्स, so you can see this. In the first example we have the difference of 6, in the second example we have a difference of 2, and in the third example we have a difference of 6. So this is considered as factor. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? Factor. Factor. ठीक है ना। अब ये फैक्टर निकालने के लिए व्हाट यू शुड हैव, आपके पास क्या होना चाहिए इस फैक्टर को निकालने के लिए? यू शुड हैव द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द होल कंपाउंड, ठीक है ना, which is given to you in the question. You can see this, the relative molecular mass of final compound, which is the molecular formula, उसका molecular mass given होना चाहिए आपको, right? अब आप निकाल सकते हैं फैक्टर। How can you find out the factor? You can find out the factor in this way, that molecular mass over empirical formula mass, right? So we can find it in this way. जो empirical formula है उसके mass से divide करा देंगे तो factor आ जाएगा. So this is 135. This is a total molecular mass of the final compound, right? And what should be the mass of this? This is empirical formula. Chlorine is 35.5 and sulfur is 32. So what is this? This is I think 67.5, right बच्चों or not? Yes, sir. So what is the factor? The factor between these two formulae is 2, right? So empirical formula को अगर आप factor से multiply कराते हो, then you will have molecular formula. So CLS multiply by 2, the molecular formula should be Cl2S2, right everyone? S2. Yes sir. So this is the additional information that you should have. अगर आपके पास ये होगी, then you can find out the factor. Factor find out कर सकते हो तो ये उसको simple empirical formula से multiply करा दो। सही है बच्चों? जी Is that clear? जी sir. So this is what you need to understand to find out the molecular formula, and this is the final thing of empirical formula and nothing we have more. So total 5 चीजें सीखनी है। अगर molecular formula given हो तो simplest ratio निकाल लो, तो formula direct भी निकाल सकते हो अगर molecular formula given हो, ठीक है? तो एक तरीका तो वो था। दूसरी चीज, अगर percentage given है तो पहली स्टेप आपका क्या है कि एटॉमिक मासेस से डिवाइड कराना है, सेकंड स्टेप स्मॉलेस्ट से डिवाइड कराना है, हमेशा यही स्टेप फॉलो होगा। अब अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है तो फिर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जो कि आपको क्या कर दे, होल नंबर में वैल्यू दे दे। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया,
फिर एम्पेरिकल फार्मूला मास को मॉलिक्यूलर फार्मूला मास से डिवाइड कराना है, फैक्टर आएगा, देन फैक्टर को एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो टोटल ये 5 चीजें हैं, जो 5 पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला में, और किसी भी तरह का क्वेश्चन फिर आप लोग कर सकते हैं। राइट एवरीवन? So you can see this. This is one of the question of IGCSE summer 18 paper 4-3, right? Nickel iodide crystals are hydrated, means water molecule यहाँ पर दिखाना है आपने. A sample of hydrated nickel iodide crystals has a following composition by mass: nickel, iodine, hydrogen, and oxygen. We need to calculate the empirical formula, right? So we have nickel, iodine, hydrogen, and oxygen, right? Nickel is 14.01%, iodine is somewhere 60.33%, hydrogen is 2.85%, oxygen is 22.81%, right? तो जरा जल्दी से बताइए निकल का एटॉमिक मास कितना है? 14. 14? नहीं 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 59 है। नाइट्रोजन का देख लिया आपने बेटे? Oh, I searched nitrogen. Yeah, my bad. मैंने भी नाइट्रोजन का देख लिया। हाँ वही तो हाँ, exactly. नाइट्रोजन का देख लिया हुआ है आपने। निकल का कितना है? 59। कितना है बच्चों? 59, yeah. 59। आयोडीन का कितना है? 127। 127। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 1, राइट? तो पहला वाला आंसर कितना आया बच्चों? 0.23। 0.23। शाबाश। सेकंड वन? 237 sir. 237 है तो 0.24. 237, कौन ठीक सा? है। सेकंड वाला बताएं। 0.47। 0.47, then 47, it would be हाँ. same. And what about this one? This is 1.4। 1.423. 423, right? So try करें थोड़ा से digits 2-3 लिख लें ताकि ये आंसर ज्यादा अच्छा हो जाए आपका, more perfect हो जाए. So you can see this, the smallest value over here is of nickel, so we can divide all the values by nickel percentage or the number of moles, sorry. So it would be somewhere, you can say that like this. So it must be 1, it must be 2, right? And it must be what? 12.15. 12.3 करके कुछ आ रहा है। 12.3, 12.15. 12.1. चलो मैं डिवाइड करके देखता हूँ. 5. Just give me a minute. So over here, this is 2.85 over 0.237. Yeah, it's 12.0 बच्चों. 12.0 दे रहा है. 12.0, 12.02, राइट? तो पॉइंट के बाद 0 आ गया तो वो नेग्लिजिबल है, उसको छोड़ दो. सही है. उसके बाद क्या दे रहा है? 1.423 ओवर 0.237. तो ये हो गया आपके पास कंप्लीटली 6, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं निकल इज 1 एंड आयोडीन, यू कैन से दैट कि उसके 2 एटम्स हैं, राइट? डॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेटेड यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ मौजूद होगा. सो यू कैन सी दिस 12 हाइड्रोजन and 6 ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? We have 6 molecules of water. What do you say बच्चों? Right or not? Correct, sir. So this is the सही final समझ answer. नहीं आया. देखिए आपके पास 12 हाइड्रोजन है, लिया। 6 ऑक्सीजन है. तो ये जो हाइड्रेटेड का मतलब होता है ना, हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं. सही है? ठीक है. जी जी. So you can say that कि आपके पास 12 हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? 6H2O, है ना? ऐसी होगा. ओके जी सर. तो दैट्स व्हाई मैंने Yes, उसको sir. बना के लिख दिया निकल आयोडाइड 6H2. सही है. So this is one more question. You can see this. Many organic compounds such as alcohol, carboxylic acid, and esters contain the element carbon, hydrogen, and oxygen. So the composition is given 60, 13.3, and 26.67. So we can write like this: carbon, hydrogen, and oxygen. Right. So this is 60%. This is 13.3%. And this is 26.67%. So bachcho, we need to divide it by 12, 1, and 16. Yes, what are the answers? 5, I think, 13.33, and this should be 1.66. 1.667. So we need to divide all of them by this because this is the smallest one. So it must be like this. So what are the
Answers बच्चों 381. 2.99, 381. 7.99. 1. Yes, 99 का मतलब है कि we can consider it, हाँ. right? So it would be C3H8O, H8. Oh, and we need to find out the factor again, molecular formula mass over empirical formula mass. So the molecular formula mass is given, which is 88. 88. Empirical formula mass 44. is, you can say that it is 44. 12 into 3 plus 8 plus 16, 36 plus 8. सर 36. ये अलग है, ये C2 है। नीचे वाला अच्छा लगे। ओ राइट, मैंने सवाल नहीं पढ़ा, माय बैड। सो यस, नीचे इसमें सवाल में पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। मैं फ्लो में निकल गया। कंपाउंड एस हैज अ एम्पिरिकल फार्मूला C2H4O, उसका रिलेटिव फार्मूला मास दिया हुआ है, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला मास हमें इसका रखना है C2H4O का। सो इट इज 12 into 2 plus 4 plus 16. So it will give you 24, 24. 28, and 44. So we need to divide it by 44. 200. So it will give you 2. So the 2. molecular formula would be C4H8O2. Right? Yes. बेहतरीन, जबरदस्त। अगर आप लोगों ने ऐसा ही किया है, so I am proud of you, my bachas, and absolutely perfect. You are doing everything, you are learning everything, and you are forwarding it, mashallah, in every class. Very good, every one of you. So thank you so much for your time and attention. And if you want to ask any questions, so you can ask.